I hope we are live now. We should be live now. Uh, I guess yes, it is working. Yeah, we are visible. I guess yes, it is, and we are audible as well. So let's go. Uh, how do we ensure least data connection? Mm, how do I make it so that it consumes the least amount of computational power in my system and works efficiently? Yeah, these are just there are many errors that I had to resolve. Oh wow, who was watching this So I'm video? waiting for someone I'm very excited about. I haven't doing a podcast, but I met this guy yesterday for like a minute, and I've been like wanting to talk to him since his journey. His story is very. Okay. The 2 minutes I talked to him was very inspirational. So I hope it is for you as well. So and I relate to a lot of things he's doing. Like I see everything in him. He hustles. He works for his family. He's very busy. At the end, I'm waiting for him. Like 9:30, 10, and he was busy in his remote job. So I see that as a mini 2 years ago. That was like how I used to be, how occupied I was. So I'm super excited to talk to him, and I think you all will also learn a lot from this. So yeah, let's see. Excited. So मेरा नेटवर्क नियर अबाउट 4 CR का था 3.8 स्टार्टिंग सैलरी मेरी बहुत कम थी मेरा सिर्फ 3 लाख का पैकेज Will also learn more job. So let's see. Excited. तो मेरा नेटवर्क नियर अबाउट 4 CR का था 3.8 स्टार्टिंग सैलरी मेरी बहुत कम थी मेरा सिर्फ 3 लाख का पैकेज था मैं कश्मीरी पंडित हूँ हमारी जर्नी शुरू हुई तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो हमारी लाइफ में आया वो बाला साहब ठाकरे का आया दिस इज जनरली ट्रू कि जितने भी लोग स्ट्रगल इनिशियली करते हैं लाइफ में हसल करते करते एवरेज लॉट से काफ़ी आगे निकल जाते हैं मे बी शायद 10 मंथ्स काम किया होगा मैंने 52 लाख करते बाला साहब ठाकरे का आया दिस इज जनरली ट्रू कि जितने भी लोग स्ट्रगल इनिशियली करते हैं लाइफ में हसल करते एवरेज लॉट से काफ़ी आगे निकल जाते हैं मे बी शायद 10 मंथ्स काम किया होगा मैंने 52 लाख आफ्टर टैक्सेस मैंने कमाया No interview, nothing. No interview. So hi everyone, welcome to my very first podcast. I haven't done a podcast before this. I'm not going to do many more. I met someone yesterday in the 100x devs cohort offline meetup, and यहाँ पे in a 1 minute conversation, I felt very connected to him, and the journey felt very similar to mine. So I wanted to share this with everyone. I think on this channel I keep talking. I'm the only one who keeps talking, and after a point it might feel कि हाँ ये तो IT है whatever. So his journey was easy. But I know people currently who are doing very well in remote jobs and have learned the same skill that I have. So I wanted to share more such stories. There won't be too many of these. There are very special people that I meet, and today we have someone like this. So whoever this is, they want to remain anonymous, and that is true for most people working remotely for multiple reasons. So I'm just going to call him Ayush for the video. Cool. So we will switch between English and Hindi, and we will try to have a very candid conversation. So that let's get started. So hey Ayush, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हरकत आप कैसे हो तो ग्रेट टू मीट यू यस्टरडे शुरू से स्टार्ट करते हैं वांट टू नो जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग कहां से हो कॉलेज वगैरह कहां से किया ओके सो हाय दिस इज आयुष मैं कश्मीरी पंडित हूँ तो बेसिकली मैं कश्मीर में पैदा तो नहीं हुआ मेरे मॉम डैड कश्मीर से हैं तो हमारी जर्नी ऐसी थी 1990s में जो इतना इंसर्जेंसी हुई थी टेररिस्ट अटैक्स होते नहीं हुए थे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी मेरे मॉम डैड काफ़ी वेल साउंड एंड काफ़ी रिच फैमिली से रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं वहाँ पे कोई ATM भी नहीं थे उसमें एक मेजर उसका रिजल्ट ये है कि कश्मीरी पंडित को भीख मांगा आई थिंक दिस इज जनरली ट्रू कि जितने लोग स्ट्रगल इनिशियली करते हैं लाइक सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2013 मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड 2017 में मेरी जॉब लगी मुझे पता था कि मुझे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था उस चीज़ को लेकर मैंने IITs के लिए भी प्रिपेयर किया एंड मैं काफ़ी अच्छा टेक्निकली आई मीन एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बट आई कैन गो टू IITs मेरे मार्क्स नहीं आए बट मैंने सोचा चलो ठीक है मैं इंजीनियरिंग में अच्छा करूँगा तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बाद जॉब लगी मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 5+ है 5+ years एक्सपीरियंस रेगुलर कॉलेज की जॉब क्या थी हाउ मच डिड इट पे सो स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत कम थी मेरा सिर्फ 3 लाख का पैकेज था और मैंने उसमें स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा मेरा 2 साल का बॉन्ड था 2 साल का मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला सो आई वाज लाइक हेल रेडी किया बट मैंने हार नहीं मानी मुझे पता था कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है दिन रात मेहनत की मैं रात के 12 बजे घर पहुंचता था मेरा ट्रांसपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट था और काफ़ी मेहनत करता था उस चीज़ में तो जब मैंने 2 साल के उसके बाद मुझे पैसों की बौछार होने लगी तो मैंने काफ़ी अच्छी कंपनी में स्विच मारा उन्होंने मुझे हाइक्स एकदम 5-6 ज़्यादा सैलरी देना स्टार्ट किया बोनस देना स्टार्ट किया रिटेंशन बोनस दिया उन्होंने परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स दिया और शेयर्स भी काफ़ी प्रोवाइड किए तो ये चीज़ मेरी काफ़ी अच्छी रही गॉट इट सो यू स्टार्ट फ्रॉम 3 लाख पर एनम यू सेइंग एंड आपका 2 साल का बॉन्ड बन गया था तो 2 साल तक छोड़ नहीं सकते ओके सो दिस प्रोबब्ली इज अ मेजर लर्निंग है तो इफ यू कुड गो बैक इन टाइम क्या आप कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करते 2 लाख देती बट बॉन्ड ना चाहिए आती वर्सेस 3 लाख जॉब मे बी यस हाँ मैं कर सकता था उस समय बिल्कुल डेफिनेटली करता बट हाँ मुझे था कि मुझे स्विच करना है बट मैं सोच रहा था कि मैं 2 साल अपने कंप्लीट करता हूँ 2 साल से लर्निंग फोकस करता हूँ मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म अपना प्लान देखता हूँ गॉट इट दैट मेक्स सेंस आई थिंक मैंने लॉट ऑफ पीपल कभी था कि बॉन्ड साइन करके ना करें बॉन्ड इज लाइक रियली स्केरी बहुत ज़्यादा स्केल होता एंड आई एम श्योर बहुत लीगली बाइंडिंग होगा कि तुम नहीं सोच सकते हाँ नहीं सोच सकते पे करना पड़ता है मेरे को 2-3 लाख रुपए की पेनल्टी साइन करनी पड़ती गॉट इट दैट मेक्स सेंस ओके इंटरेस्टिंग सो यू सेड यू लेफ्ट एंड देन उसके बाद आपकी 3 4 5 सैलरी हुई तो आफ्टर 2 इयर्स यू रनिंग लाइक 10 15 20 LPA है उससे कहीं ज़्यादा एंड दिस वाज ऑन साइट जॉब या रिमोट वो कंप्लीटली देन उसके बाद आपकी 3 4 5 सैलरी हुई तो आफ्टर 2 इयर्स यू रनिंग लाइक 10 15 20 LPA उससे कहीं ज़्यादा दिस वाज ऑन साइट जॉब या रिमोट वो कंप्लीटली रिमोट जॉब है और मुझे ऑफिस आना ही नहीं है मेरी ओके तो आफ्टर द 3 लाख जॉब वाज दैट ऑन साइट और रिमोट वो ऑन साइट था मुझे ऑफिस जाना पड़ता उसके बाद आप रिमोट स्टार्ट कर दिया आपने काम करेक्ट रिमोट करना स्टार्ट हाउ डू यू फाइंड योर फर्स्ट रिमोट अपॉर्चुनिटी सो ये कोविड की वजह से हुआ कोविड में जब मैंने रिमोट जॉब स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि कंपनीज स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया और उन स्टार्टअप का क्रेडिट है कि ऑफिस नहीं करेंगे सब चीज़ घर पे करेंगे सो मैं उस कंपनी से एसोसिएटेड था बट उसके बाद मुझे था कि मैं सैटरडे संडे भी कुछ अपने स्किल्स को एनहांस करूँ तो मैंने फ्रीलांसिंग का सोचा तो मैंने फ्रीलांसिंग करने का सोचा देन मैंने फ्रीलांसिंग ज्वाइन किया और गेटिंग पेड 1 लाख रुपए सो मुझे पता चला कि भाई 1 लाख रुपए है इसके लिए इतनी मेहनत उससे 1 लाख से कहीं ज़्यादा मैं अपनी नॉर्मल जॉब नहीं कमा रहा था मैंने कहा नहीं यार गिव मैं तो नहीं करूँगा बट समहाउ मुझे एक इंडिकेशन मिला कि मेरे और क्लाइंट के बीच में वो है बीच में मीडिएटर है जो उससे भी ऊपर पैसे कमा रहा है मेरे से मैं काम करूँगा उसको हर महीने 50,000 मेरे काम करने के मिलेंगे ये क्या चीज़ है ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मैंने क्लाइंट को डायरेक्टली रीच आउट किया कभी मुझे पूरा सैलरी चाहिए मैं काम कर रहा हूँ और मैं मीडिएटर को नहीं बताऊँगा तो क्लाइंट लॉस करेगी तो क्लाइंट बोला ठीक है भाई तुमको हम उतना पैसा देंगे उसने मुझे पूरा 1.5 लाख देना स्टार्ट किया जब मैंने 1.5 लाख रुपए में कमाना शुरू किया उसके बाद मैंने क्लाइंट से दूसरा प्रोजेक्ट लिया एंड प्रोजेक्ट वो सो इजी मैं इंडिया में ज़्यादा मेहनत करता हूँ वहाँ मजे मजे में काम तो मेरा अर्निंग धीरे धीरे 3 स्टार्ट हो गया देन आगे मैंने और प्रोजेक्ट मांगे तो मैंने वही केस मीडिएटर कर रहा था मैंने 1.5 लाख रुपए मांगा 1 लाख रुपए किसी डेवलपर जूनियर डेवलपर को जिसको पैसों की जरूरत है उसका भी बताओगे वो स्टार्ट हो गया देन आगे मैंने और प्रोजेक्ट मांगे तो मैंने वही केस मीडिएटर कर रहा था मैंने 1.5 लाख रुपए मांगा 1 लाख रुपए किसी डेवलपर जूनियर डेवलपर को जिसको पैसों की जरूरत है उसका भी बताओगे वो सीख रहा है और 50,000 मैंने कमीशन स्टार्ट किया तो ओवरऑल बजट मेरा पर मंथ का 15 to 20 लाख के बीच में आता था अप डाउन चलता था एंड देन माय वर्थ वाज नियर 7 लाख 6 7 5 5.5 वाज एक्चुअली अर्निंग तो साल से लेस देन मैंने काम किया और मैंने मे बी 10 मंथ्स काम किया मैंने 52 लाख आफ्टर टैक्सेस मैंने कमा डाला 52 लाख That's very cool. That's super inspiring. And that was the hustle. So that started in 2020.
Correct. और आपकी जॉब थी तो शुरू में फर्स्ट जॉब आपने फ्रीलांसिंग की, आप जॉब के साथ कर रहे थे। हाँ वही करो। Like, so you were probably putting in more than 80, 70, 80 hours, 40 hours in your original job. At what point did you leave the job? क्या तो freelancing करूँगा? मैंने फ्रीलांसिंग एक्चुअली छोड़ दी, अपनी ओरिजिनल जॉब को कंटिन्यू किया। उसका रीजन ये था कि फ्रीलांसिंग में कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं लेट नाइट जाना पड़ रहा था, थोड़े हेल्थ इश्यूज हो रहे थे एंड मार्केट बहुत डाउन था और कंपनी का पे स्केल थोड़ा नीचे जा रहा था, और मुझे प्रोजेक्ट कम मिल रहा था। मैं नहीं, रेगुलर जॉब मेरी सेफ है, वो इंडिया की कुछ टॉप 50 रिचेस्ट मैन की कंपनी जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, तो ऐसा भी मुझे पता है मैं 10 साल भी इस कंपनी में रहूँगा तो जॉब सिक्योरिटी है, तो स्टार्टअप नहीं छोड़ूंगा, मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी। मे बी इट्स अ गेस, आई एम नॉट श्योर, मे बी 6-7 मंथ्स में मार्केट रिवाइव होता है, तो प्रोबब्ली आई कुड प्लान कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। तो okay, so when you started freelancing and working, you आपको बहुत सारे clients मिले during that bull run of 2020-2022, and अब आपने वहाँ पे मार्केट लिया, तो अब you're not working as a freelancer anymore, अब आप सेम जॉब में ही हो। करेक्ट। Would make sense. So how much money do you make in this job? सो मेरे को कंपनी ने ई-शॉप्स दिए, बेस सैलरी मेरा समवेयर 30 to 40 के बीच में, सो व्हिच इज लाइक गुड एनफ फॉर मी, बट मेरे को कंपनी ने ई-शॉप्स दिए एंड मे बी इन कमिंग टाइम एक बड़ी डेटा कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू फैंग, इट्स नॉट दैट पॉपुलर, बट वो शायद हमारी कंपनी को एक्वायर करती है। अगर इन केस वो कंपनी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करती है, सो मेरा नेटवर्क नियर अबाउट 4 ईयर का आता है, 3.80 समथिंग मैंने कैलकुलेट किया। सो मैं वो लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहा हूँ कि अभी बेस सैलरी बड़ी कम है, आई नो कि मेरे एक्सपीरियंस पे 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे मार्केट में लोग 70-80 कमा लेते हैं फैंग जाके, इजीली मिल जाता है, बट उसमें टैक्स पे करना, फिर ऊपर बोनस लेना, तो वो समहाउ उतना फिजिबल नहीं रहता। तो अगर मैं थोड़ा और मार्केट 6 महीने के बाद ट्राई करूँ या ओरिजिनल जॉब भी रखूँ, फ्रीलांसिंग भी करूँ, तो मैं किसी गूगल फेसबुक एम्प्लॉय से कहीं जा सकता हूँ। एक्जेक्टली। Very good. So and this is startup, publicly traded नहीं है जहाँ पे आप नहीं पहुंच सकता हूँ, मेरा ओरिजिनल जॉब प्लस फ्रीलांसिंग अगर कैलकुलेट करें, You get a Google offer for let's say 60 lakhs, and you're earning 40 here. Would you go for the Google offer? मे बी नो, क्योंकि फ्रीलांसिंग से मैं कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ। मेरा ओरिजिनल जॉब प्लस फ्रीलांसिंग अगर कैलकुलेट करें, अगर उसमें बोले कि इसमें कितना टैक्स में करना चाहिए, तो 80-90 लाख तो इसी बन जाता है। Correct. So you're saying you can easily make 80-90 already, जिसमें 30 साल से आपकी जॉब चल रहा है। हाँ, बाकी सब फ्रीलांसिंग की बात है। What do you do on a daily basis? आप कोड किस टेक्नोलॉजी में करते हो? मैं बैकएंड इंजीनियर हूँ, मैं जावा में काफी स्ट्रांग हूँ, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रोसर्विसेज पता है, और ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके मैंने AWS Azure। On a daily basis आप कोड किस टेक्नोलॉजी में करते हो? मैं बैकएंड इंजीनियर हूँ, मैं जावा में काफी स्ट्रांग हूँ, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रोसर्विसेज पता है, और ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके मैंने AWS Azure एंड GCP पे काफी अच्छी तरह से काम किया, डॉकर कुबरनेटिस भी किया, थोड़ा बहुत पाइथन भी जानता हूं, बट मैं पाइथन के सिंटैक्स इतना फेमिलियर नहीं हूं। बाकी मैंने फ्रंट एंड भी स्टार्ट किया था, मैं एंगुलर डेवलपर था, मैंने रिएक्ट पे थोड़ा काम किया, बट आई नेवर लाइक्ड इट, मुझे फ्रंट एंड में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, तो मेरे को नहीं, मैं प्योरली बैकएंड इंजीनियर ही रहना चाहता हूं, नॉट फुल स्टैक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुल स्टैक, मुझे बैकएंड बहुत पसंद है। Right. So you're pure backend developer in Java, Spring Boot, वाला stack. Okay. जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तो मुझे इस कंपनी में पोटेंशियल नजर आया कि भाई ये कंपनी बहुत सही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसमें कुछ बिट्स प्लानिंग के लोग थे, कुछ आईआईटीज भी थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके 12 के इंजीनियरिंग परसेंटेज भी बहुत, एंड दे वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो स्टार्टअप में सब टेक्निकली स्ट्रांग थे। How much do you think this network matters? आई थिंक ऐसा लगता है कि जब आप कॉलेजेस में रहते हैं तो आपके जो नेटवर्क है वो काफी स्मार्ट लोगों के बीच में भी होते हैं, आप कोई ना कोई आप जानते होंगे ये बंदा बहुत स्मार्ट है, भले अभी अच्छा नहीं कर रहा लेकिन ये नेटवर्किंग बनाने होता है। मैं सबके साथ नहीं बना के रखता था, मेरे इतने फ्रेंड्स सब इंजीनियर्स हैं, सारे ऐसे कोई नॉन इंजीनियर फ्रेंड नहीं है, तो अगर लगता है कि मेरी जॉब चली गई तो मुझे पता है कि मेरे इन दोस्तों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, इनके मैनेजर्स, इनके वीपीज, इनके सीटीओ से बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो मुझे फ्रैक्शन सेकंड में रेफर कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग टाइम में कनेक्शन बिल्ड करना होता है, सारे दोस्तों के साथ बात करनी होती है। मैं आज भी अपने उन फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करता हूं जिनसे मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, तो मेरा नेटवर्क अभी भी स्ट्रांग है, तो जिनके कोई भाई बहन नहीं है लेकिन वो डेफिनेटली अपने नेटवर्क को एक्टिव रख के उनसे बात करते रहे। मे बी कोई उस समय अच्छा ना कर रहा हो, मे बी उस समय जिसकी मार्क्स अच्छे ना आ रहे, बट यू नेवर नो कौन कितना हाई जंप कर जाए। मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो मुझे अपनी उन्होंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया, मेरे को डबल सैलरी देने को तैयार है, एंड उनका कोई इंजीनियरिंग परसेंटेज इतना खास नहीं था, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, और ऐसे नेटवर्क आपको हर जगह मिलेंगे, कोई ना कोई स्मार्ट इंसान आपको लाइफ में मिलेगा। Got it. Yeah, that makes sense. So how did you approach international clients जब आप freelancing करते थे? So I didn't approach international clients. So I saw your video. I could see that, I mean, you were doing pretty well. So I shared some of your videos in my WhatsApp group, and there was a girl. She knew you. I'm not sure कि वो आपको कैसे जानती थी. Maybe she's also my Principal of my college, yeah, same batch. Okay, okay. So उसने मुझे बताया, yes, I know this guy. He's doing pretty well. तो उसने बताया, if you're interested, मैं तुम्हारे कुछ क्लाइंट के साथ नेटवर्क बना सकती हूँ। तो मैंने कहा ओके। तो उसने मेरे को डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डील करना बताया कि तुम डायरेक्टली पिंग करो, वो भी सीईओ को। वो सीईओ इंडियन था, वो यूएस में 14-15 साल से है, और वहाँ पे उसको स्टार्ट करता है। तो मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ वहाँ पे। उनको इतनी रिक्वायरमेंट थी जावा डेवलपर की, अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी कि जब मैंने उसको मैसेज किया सीईओ को, उसने मुझे रात को 12 बजे बोल दिया भाई तू आ जा सीईओ। मैं रात के 12 बजे ज्वाइन किया, मैं अपना ऑफिस का काम पैकअप कर रहा हूँ, रात के 12 बजे मैं उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, 3 बजे तक काम कर रहा हूँ। तो वैसे स्टार्ट हुआ, मैंने कोई इंटरव्यू दिया, कोई मैंने रिमोट आया या लिंक्डइन रिक्रूटर कहीं किसी का कोर्स नहीं, कंपनी खुद चल गई मेरे पास, ऐसा हुआ। That really means कि तुम Java में बहुत अच्छा हो. So how did you gain those skills? स्टार्टिंग में जावा में इतना अच्छा नहीं था, इंजीनियरिंग में मैंने ज़्यादा कोडिंग वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया। इंटर्नशिप जो मैंने की थी अपने थर्ड ईयर में, बहुत मुझे किकस्टार्ट मिला, और मेरे को सीनियर्स काफी अच्छे मिले थे। वो जो मैं कुछ गलती करता था तो मुझे वैल्यू देते थे, मुझे बेइज्जती मारते थे। वो चुपता था बहुत ज़्यादा, बट वही ना, मेहनत करते करते इनिशियली जावा इज नथिंग बट एक अंडरस्टैंडिंग एक लैंग्वेज की, वो इवेंचुअली आ जाता है। 6 मंथ 7 मंथ साल भर में आ जाता है। उसके बाद फिर जब आप किसी चीज़ में फंसते हो, आप इंटेलिया जितना अच्छा आपको कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने टूल दिया, आप ऑनलाइन सॉरी आप कोड करके डिबग कर सकते हो, आप इवैल्यूएट एक्सप्रेशन कर सकते हो, ये कहाँ पे मैं फंस रहा हूं, कौन कहाँ है, तो ये सारी चीज़ और बाकी तो लीड कोड वगैरह सिंपल है। मैंने इतनी ज़्यादा डीएसए नहीं करी है, जितना मैंने ऑफिस में काम किया उतने किया, तो मेरे सीनियर्स बहुत सुपर थे, कोई डीबीए था, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर था, कोई बैक एंड इंजीनियर था, एंड सब स्मार्ट थे। बट मेरा करियर ग्राफ तब ग्रो किया मैंने स्टार्टअप किया। एमएनसी में ये मान लीजिए मैं 30% 40% कंट्रीब्यूट कर पाता था। स्टार्टअप में मैं एक्चुअली मोर देन 95% कंट्रीब्यूट कर पाता था, क्योंकि एमएनसी में मुझे 3 दिन में काम करना पड़ता है, और स्टार्टअप में मुझे बोलते हैं कि तुम कोई नहीं, तुम एक हफ्ते से ज़्यादा ले लो, बट अच्छे से करके दो। वहाँ मुझे सीखना है, और 10 लोग बताने वाले भी आपको अच्छे से बताएंगे, तो स्टार्टअप में ग्रोथ जबरदस्त हुई। तो वो रीजन था कि मुझे इतना जावा में मेरा स्ट्रांग बैकग्राउंड बन गया। Got it. And startup में what is the reason that you're so motivated to work for them versus जो आपको सर्विस बेस में लगा था? उसमें एक्चुअली सर्विस बेस में था, बट मेरा क्लाइंट प्रोडक्ट बेस्ड था, तो मे बी वहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस में थी, इतना फास्ट ट्रैक नहीं था। स्टार्टअप में जल्दी मैं खुद डिसीजन बना सकता था, मैं अपना थॉट प्रोसेस सीटीओ सीईओ को बता रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं करो, वैसे करो, वैसा करो। और अगर आपको कोई चीज़ कोई फीचर बनाना है, उस फीचर को बनाने के लिए किसी बड़ी कंपनी में 10 लोग काम करेंगे, यहाँ वही फीचर मुझे अकेले खुद के दम पे बनाना है। ऐसा इनिशियली मैं स्टार्टअप ज्वाइन करने के बाद बहुत घबराया हुआ था, ये मुझे निकाल देंगे, मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, इनका लेवल अलग है, बट 4-5 मंथ्स के बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है। इतना कोई बड़ा वो नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है स्टार्टअप भी। Got it. Makes sense. Cool. So last piece of advice for anyone who is either in college या फिर in a service based company कि how can they so आपकी आंखों में बातों में बहुत कॉन्फिडेंस देता है स्टेटमेंट, हाँ हम कर लेंगे, या मैं बिना सिर्फ मनी आज से 5 लाख महीने कमा सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस वो कैसे बिल्ड करेगा, वो चेक कर रहा है, what would you tell him? इनिशियली तो बहुत पेन होता था, इमोशनल स्टेज था, भाई साल का 3 लाख कुछ 10-15 हज़ार रुपये मेरा पुणे में रेंट था, कुछ बचता नहीं था। तो अंडरस्टैंड, बट एक होता है ना कि हाँ हमें करना है, पेरेंट के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो दिलो दिमाग में था कि हाँ मेहनत करनी है। तो वो मेहनत 2 साल मैंने सोचा कि कोई करना है, कुछ नहीं होगा, बुरा समय निकल जाएगा। एंड सब में दिमाग है, जो इंसान कोई नहीं जानता। मैंने कॉलेज में इतने डीपली कोडिंग को भी देखा नहीं, ट्रस्ट में सिर्फ थोड़ा बहुत कोड करता था मैं, लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत की और सब चीज़ हो गई। 2-3 साल अपने आप स्ट्रगल कर लिया, तो आगे के साल आप क्या चीज़ जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बट ये नेटवर्क बनाओ, अगर नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को लूज करोगे। आपके नेटवर्क में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने पुराने फ्रेंड को यहाँ अपनी कंपनी में मैनेजर बनाया, ऐसा भी हुआ है। वो नेटफ्लिक्स में बोला कि जितना नेटफ्लिक्स में कमाएगा स्टार्टअप ज्वाइन कर, स्टार्टअप जो 300 दे दे यहाँ पे, अब वो नेटफ्लिक्स छोड़ के कंपनी में जॉब कर रहा है। All right. Super interesting. All right. Last question. Where do you spend your money? आपका पैसा कमाते हो, where do you spend it? मैंने पापा को बर्थडे पे कार गिफ्ट की, मॉम को डायमंड गिफ्ट किए, गोल्ड गिफ्ट किए, प्रॉपर्टी परचेज किया, उसमें घर में रिनोवेशन कराया। एक मेरा किसी 5 स्टार से कम नहीं दिखता है, काफी लग्जरियस है, तो काफी अच्छे से मैंने मेंटेन किया। बाकी सेविंग वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह वो ठीक है, उतना चलता है। All right. Nice. Super interesting, man. Thank you so much for coming and बहुत मजा आया आपसे, wish you all the best. थैंक यू थैंक यू।
Okay, so this is the video that I watched just live now. But it is funny. It is funny to see this. Yeah, but that website that I was trying to build is getting a bit tough. So we can try this. We can create a very simple, responsive website for our portfolio, and we can deploy the projects rather than deploying the website. That would be good, I guess. That would surely get us a good job as a front-end developer, right? Yeah. So let's get into it. Let's build it. Let's build this. Why not? This website seems good. देखो इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला एशिया कप में बिल्कुल फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पे। Can we talk about the green gypsy? I've sent you a WhatsApp message जिसमें उस रात की एक पिक्चर है. You have a photo? Why can't I screenshot it? आपने view वही once ads किया है? में हाँ वही जी. पगला तो जाता view हूँ. once में you can't screenshot it. No sir. Security hard है भाई WhatsApp का. We're going to be creating this minimalistic black and white portfolio website. It is perfect for complete beginners in web development. You only need a basic understanding of HTML syntax and CSS styling to get started. We're going to have a pretty nav section up here, and we click that, it takes us to the next section on our page. We have an About Me section, we have your Experiences section, we have your projects, of course, where we can link to the live demo of the project, and the GitHub repo. We have a Contact Me page where people can send an email or reach out to you on LinkedIn. And of course, here they can download your CV and get more of your contact info. And if we take a look here, we see that the website is also fully mobile responsive with a nice hamburger menu up here, replacing our desktop navigation. And if we take a look here, we see that the website is also Yeah. or reach out to you on LinkedIn. And of course, here they can download your CV and get more of your contact info. And if we take a look In Spicer. Okay, it's basically inspect. here, we see that the website is also And he has done something here to make it. Okay, he has changed the dimension. fully mobile Okay. responsive with a nice hamburger menu up here, replacing our desktop navigation. We are going to learn how to build all the parts of this website from scratch using only vanilla HTML, CSS, and JavaScript. And we're going to host and deploy this website for everyone. Build all the parts of this website from scratch using only vanilla HTML, CSS, and JavaScript. And we're going to host and deploy this website for everyone and all our friends to see using Netlify. We're going to use GitHub for version control, CSS, and JavaScript. And we're going to host and deploy this website for everyone and all our friends to see using Netlify. We're going to use GitHub for version control. We're going to use GitHub Desktop to smoothen the process. We're going to use Visual Studio Code for writing using Netlify. We're going to use GitHub for version control. We're going to use GitHub Desktop to smoothen the process. We're going to use Visual Studio Code for writing our code. And we're going to use Google Fonts for adding a custom font to our website. So let's get started. First of all, if you don't have a GitHub account, I would go to github.com and simply create an account. It's quite straightforward once you have an account. Next step, go to desktop.github.com and download GitHub for your computer. If you have Windows or Mac, set that up. It's going to ask you to log in with your GitHub account. Once you have logged in, it's going to look a bit like this. Next step is to download Visual Studio Code. You get that from code.visualstudiocode. So download that and install. Once you have installed Visual Studio Code and run it for the first time, it's going to look a bit like this. I'm now in the finished project folder, but we're going to start from scratch in a moment. So let's set up our project folder. You see that the current repository I'm in on GitHub Desktop is this finished project that I already made. But I'm going to create a new repository, and if that's your first one, Let's just watch this video for some time. this is how you do it. So we go to File, click New Repository. We're just going to call it whatever we want. It's not important. I'm going to call it something similar to the finished one. HTML dash CSS dash JS dash portfolio tutorial 2. There we go. And then we just create the repository. And we hit this publish repository. That's going to put it out on from our desktop here. There we go. And then JS dash repository. And we hit this publish repository. That's going to put it out on from our desktop here, from our GitHub desktop. It's going to publish it to our GitHub, where we can access it online and on any computer. And you can choose to keep this code private or not. That's up to you. I'm going to open that up to be public. And there we go. Once that is finished, we can open this repository in our Visual Studio Code. And then we see that we indeed opened that project right here. You can see the name of the project here. Close this welcome information. You can also delete this file here. You don't need it. Let's set up. So first off, we're going to create a folder. You can also delete this file here. You don't need it. Let's set our project structure up. So first off, we're going to create a folder, and we're going to call that assets. And in this assets, we're just going to download from the repo in the description. It's going to look a little something like this. We're going to go to this code here, this green button. We're going to download that zip. We're going to open that folder. We're going to extract it here. We're going to go inside, and we're going to find the asset folder. Inside the asset folder, just target everything. Let's actually just drag it in like this. So these are all the assets, all the pictures that we're going to be using for the website. All the logos, all the images, and the resume. And here you can already switch this resume to your own. This is just a template I found online. Now that we have our logos, all the images, and the resume. And here you can already switch this resume to your own. This is just a template I found online. Now that we have our assets, we're just going to create the rest of our files. We only need 4 more files. We're going to start with our HTML called index.html. We're going to create the next file called style.css.
We're going to also have another CSS file called media queries.css, and we're going to have a script.js file. And that is all the files we need for this project. So let's get started with our HTML structure. First off, you're going to hold Shift and exclamation mark, or 1. It's going to show this one up. You're going to click this exclamation mark, and it's going to give you some basic boilerplate HTML syntax. We're going to write in this title, we're going to exclamation mark, HTML structure. First off, you're going to hold Shift and exclamation mark, or 1. It's going to show this one up. You're going to click this exclamation mark, and it's going to give you some basic boilerplate HTML syntax. We're going to write in this title, we're going to write my portfolio. The next thing we are going to do in our Visual Studio Code is we're going to download an extension. We're actually going to download 2. As you can see on this side here, these are extensions. If you don't have any and haven't downloaded any before, don't worry, it's quite easy. You see, these are the ones I have installed, and we're going to install one called Live Server. This one by Ritwik Day. We're going to just click install here. That is going to enable us to basically run this website as if it was hosted online. And that's going to be very useful when we are developing our website and also when we are testing our JavaScript code that we're going to be running. We keep our code in line, indented, and basically keep it. So take our HTML document and Shift and hit save. We're going to copy that style sheet. First one, style.css. We're going to hold Alt and Shift. Then you're going to hit arrow down. This is going to copy that line. This is also a style sheet. We're going to link to our media queries file and hit save. We are then going to add in result.css to our media queries file and hit save. We are then going to add in the bottom of the body, we're going to add a script. And then when you start writing that, you see that this is the source. We're going to add the script.js file here. So now all the 3 other files are linked to this index.html document. Now we're ready to look at our website. Let's just write hello here to see if it works. When you have installed Live Server, you should be able to see this button down in the right corner here. You're going to click that, and that is going to open our new web page. As you can see, we can reference it and kind of our web page is live. I'm also opening the already finished project here in a new tab so that we can reference it and kind of switch back and see how it looks like. So let's go back to our VS Code, and now we can start creating our website. The first thing we're going to create inside our body element is ID to VS Code in a new tab so that we can reference it and kind of switch back and see how it looks like. So let's go back to our VS Code, and now we can start creating our website. The first thing we're going to create inside our body element is a nav element. It's going to have an ID and using desktop nav. And we're going to use this ID to target it with our style sheets if you haven't been using ID before. Inside the nav, we're going to create a div, and it's going to have a class of logo. And here we're going to write John Doe, or you can write your name, because we're just going to use our name as a logo, but you could have put a picture here if you wanted to. Under that, we're going to put another div, and inside that div, we're going to have an unordered list, and that is going to have a class of nav links. Inside there, we're going to have a list element. And inside that list element, we're going to have a link element, and this link is going to go to each list element, and that is going to have a class, another div, and we're just going to use our name as a logo, but you could have put a picture here if you're going to write John Doe, or you can write your name, because we're just going to use our name as a logo, but you could have put a picture here if you wanted to. Under that, we're going to put another div, and inside that div, we're going to have an unordered list, and that is going to have a class of nav links. Unordered list and class. देती है उसको. Okay, class. Inside there, we're going to have a list element. And inside that list element, we're going to have a link element. And this link is going to go to each section. What we're creating here is the navigation at the top of our web page. And it's going to lead, using this hashtag, it's going to lead to each section that we are going to be creating later, because each section is going to have their own ID tag similar to this. This one is going to be called About. And like previously, we're going to hold down Shift, Alt, and press down 3 times. Save ourselves some time there. Experience, projects, contact. Experience, project, page. Perfect. Save, and you see About. Doing its job, indenting it for us. Okay, so nothing is happening on the page. We keep our page. Perfect. Things are working, and if we click About, its job, indenting it for us. Let's go see our page. Perfect. Things are working, and if we click About, you see that the URL is updating. So nothing is happening on the page because we haven't created that section yet, but basically we see that the links are working as intended. Now let's start styling our website. I'm going to put our style sheet. If you just drag it to the right side of VS Code, you can see that you can get a split screen here. I'm going to drag the style sheet there, and we're going to start styling our navigation. But first we're going to put in some general styling. And what I'm use the comment and then beside parties that we have completely until the end of the page. It's just so we know we're going to target the entire HTML in the
body. That we are gonna fight, and then save. Back to our code. We don't need it. There we go. We see that the font has been updated. See how our website is looking. Back to our code, and we're gonna paste that in here. There we go. Save. And let's see how our website. Gonna go back to. We're gonna paste that in here. Remove the style. Save. Gonna go back to Google Fonts. Paste that in here. There we go. Been updated. Next thing we're gonna add is HTML in sections. 8585. Class we're gonna basically change. Be in effect. The comment here. Desktop. Target the nav links. It's basically lying in justify, set it to a subject so it can be as a block, which is like the inline, the display. If you haven't been working on justify, face around the phone as a block, start adjusting it basically flexible. So basically the console here, we're gonna add a gap, 2 rem between the elements that are flexed. We're gonna add a list style, none to remove the bullet points in our links. We're gonna add the font size to increase the font size a bit, of REM. As well, if you're not familiar with REM, it's basically a unit of measurement within front-end development. You can basically think of it as, it's another way to say pixels. It's not pixels. Pixels, but it is related to it. So I think by default, a paragraph is set to 1 REM. And we can see that our navigation is starting to look better, starting to look like something that the finished product is going to look like. We're going to style the link element next. We're going to give them a color of black. We're going to give them a text decoration of none. We're going to give them a text decoration color of white. And then we're going to target the links when we hover over them. We want to change the color to gray. We want to add a text decoration